Good evening, everyone. I welcome all of you for today's webinar, which is on artificial intelligence in IVF. जैसे कि हम 3 o'clock start करते हैं, let's see कितने participant अभी add हुए. We will wait for some participant and then we will start the webinar of today. So now we can start our webinar. So I welcome all of you for today's webinar, which is on artificial intelligence in IVF. It is very advanced technique in IVF, which we will discuss today. Our speakers are Dr. Preeti Jindal and Dr. Smithu ma'am. Dr. Preeti is a director of the Touch Clinic and Dr. Smithu ma'am is a consultant at the Touch Clinic. Before starting up this webinar of this topic, I want to discuss our annual screening program. As you can see on the screen, this screening program we are conducting from last 10 years. Annual screening program which been conducted annually since 10 years, which has been started from 11th of August, which goes for 1 month till 11th of September. The timings will 10 o'clock in the morning to 5 PM. ये हमारे क्लिनिक के टाइमिंग्स है. इस टाइमिंग्स पे आप आ सकते हैं. स्क्रीनिंग पैकेज में जो इंक्लूड होता है दैट इज गायनी कंसल्ट होगी बाय सीनियर कंसल्टेंट. पैप्स में जो है वो कवर होगा. पेल्विक अल्ट्रासाउंड कवर होगा. फ्री लाइफस्टाइल एंड एंटी एजिंग काउंसलिंग इसमें कवर होगी. और BMD जो है बोन मिनरल डेंसिटी, उसका चेकअप जो है वो इसमें कवर होगा. Some tests which will be included in this, that is CBC, TSH and blood sugar का test. ये सबका अगर आप टोटल करेंगे तो that will be cost 7,000. But हम जैसे आपको बताया every year करते हैं तो just of ₹2,800. इस पे रजिस्टर करने के लिए, इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे जो स्क्रीन पे आ रहे हैं इन पे कॉल करके बुक कर सकते हैं. नंबर है 99,157 48821. इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए. Right, so now we will start the webinar. So now I invite Dr. Preeti Jindal, who is the director of the Touch Clinic, to start the session. Please. Hello everyone, I am Dr. Preeti Jindal. I am director of the Touch Clinic, which is Advanced Gynae and IVF Center. We deal with all high-risk pregnancies, IVF, and also cosmetic gynae. So today's topic is artificial intelligence in IVF. Now, what is IVF? As we all know, IVF is a process in which eggs are taken out from the body of the women and they are fertilized with her partner's sperms, and embryos are formed, and these embryos are transferred inside the women as per the days required. Now, IVF in best of hands has a success rate of only 30 to 35%. सक्सेस रेट कभी भी सेंटर का नहीं होता. सक्सेस रेट हमेशा कपल का होता है. अगर कोई 20 years old कपल करा रहा है फॉर सम रीजन तो उसका सक्सेस रेट विल बी वेरी हाई. वहीं पे अगर कोई 40-45 years old कपल करा रहा है तो उसका सक्सेस रेट नेचुरली कम होगा. पर अगर हम एवरेज सक्सेस रेट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सक्सेस रेट इज अराउंड 30 to 35%. सो व्हाट इज द रीजन कि आईवीएफ के सक्सेस रेट इतने कम होते हैं? Now the reason for the decreased success of the second, I'll just start the slideshow. So the reason for the decreased success is very simple to understand. किसी भी प्रेगनेंसी होने में दो चीजें काम करती हैं. एक तो है एम्ब्रियो जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं टू अ सीड, और सेकंड है यूट्रस, यूट्राइन कैविटी या वूम, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं सॉइल से.
तो अगर सीड में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम है, तो भी सक्सेस रेट नहीं होगा, और अगर सॉइल में यानी कि यूट्राइन कैविटी में कोई प्रॉब्लम है तो भी सक्सेस रेट कम होगा। सो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें एम्ब्रियो को अच्छे से चूज करने में हेल्प करता है। So artificial intelligence is an advanced embryo selection software which helps to select the best embryo in IVF for improving success rate. It identifies the embryo जिसके morphological features are such that it calculates the implantation potential. मतलब simple language में अगर आपके 10 embryo बने हैं तो उनको देखने में मॉर्फोलॉजिकली वो सारे सेम रख सकते हैं, पर जेनेटिकली दे में भी एब्नॉर्मल, वो एब्नॉर्मल एम्ब्रियोस हो सकते हैं। सेकेंडली उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे कि ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है कि इस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन एंड हेल्दी बेबी गिविंग पोटेंशियल इज हाई, तो फिर वही एम्ब्रियो को पिक करके हम आपके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये सारे पोटेंशियल जो होते हैं ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, ह्यूमन आईज के लिए ये इनविजिबल होते हैं। So it gives a score to each embryo which assists in ranking the embryos for transfer. So इसका क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा जो होता है वो है to improve the success rate, क्योंकि हम बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्ट कर रहे हैं और बेस्ट एम्ब्रियो हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड टू अचीव प्रेगनेंसी डिक्रीजेस। क्योंकि अगर एबनॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ या अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आपको फिर से आईवीएफ कराना पड़ेगा या फ्रोजन एम्ब्रियोज को लेना पड़ेगा, फिर से फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल करनी पड़ेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स PGTA to be used on fewer embryos. अब एक टेक्निक होती है जिसमें हम एम्ब्रियो की बायोप्सी करते हैं और उससे जांच करके पता करते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो अच्छा है। Now that procedure known as PGS नॉर्थ इंडिया में पहली बार ऑन साइट टच क्लिनिक पर हमने इंट्रोड्यूस किया था। अब उसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है, एक तो वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है कंपेयर टू प्लेन एक्सी, सेकेंडली उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं तो आप उसी साइकिल में एम्ब्रियोज को असेस भी कर सकते हो और उसी साइकिल में वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो फिर हमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर पे नहीं जाना पड़ता। सॉरी, alternative tool for patients who do not select PGTA because of potential risk and cost or where test is unavailable. हर जगह PGS की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा सकती है। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम द टच क्लिनिक हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस फैसिलिटी। It also provides competitive advantage by significantly improving IVF success rates. It builds on globally diverse data, ensuring unbiased, accurate assessment for every single patient. And it is also printable. हम print करके आपको दिखा देते हैं कि भाई आपके इस एम्ब्रियो का सर्वाइवल पोटेंशियल इतना है और इसका नहीं है। So you can even take a call कि हमने ट्रांसफर नहीं कराना है इस साइकिल because it leads to a lot of emotional upheaval and it is emotionally depressing अगर आपका सक्सेस नहीं होता है। सो अगर आप ये देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यू कैन सी दीस आर पुअर एम्ब्रियोस, इसमें बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन और ये अच्छा एम्ब्रियो है तो वो कैलकुलेट करके हमें बता देता है। तो हाउ डज इट वर्क? इसके लिए एम्ब्रियो को कुछ खराब नहीं होना पड़ता, एम्ब्रियो की फोटोग्राफी लेकर इस सॉफ्टवेयर में डाली जाती है। It's a web-based decision support tool. It assesses known components of embryo that indicate its quality. It identifies complex patterns which are not visible by the human eye. तो ये एक रिपोर्ट है, you can see one patient how each embryo is scored. इसका देखो इस एम्ब्रियो का the expectancy life is पर viability score is 9.9 by 10, मतलब कि ये वाला एम्ब्रियो 9.9 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि एक बेबी हेल्दी बेबी देगा। इसका वायबिलिटी स्कोर 9 है। ये हमारे ही पेशेंट्स के स्कोर्स हैं। अब इस वाले देखो, इस पेशेंट ये वाले एम्ब्रियो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है पर इसका वायबिलिटी स्कोर कितना आया? 3.5। और ये वाला और भी सुंदर एम्ब्रियो, इनफैक्ट ये एम्ब्रियो इनसे भी सुंदर लग रहे हैं पर इनका वायबिलिटी स्कोर इज ओनली 2.9, मतलब 10 ऐसे एम्ब्रियो में से सिर्फ 2 ऐसे एम्ब्रियो प्रेगनेंसी देंगे। Then it also assesses genetically. तो इस वाले एम्ब्रियो का जेनेटिक स्कोर यूप्लॉइड, मतलब कि वो जेनेटिकली एबनॉर्मल नहीं है, इज 9.1।
इसका 6.9 है, एंड दीज टू एम्ब्रियोज इनका जेनेटिकली एबनॉर्मल होने के चांसेस जो जेनेटिकली नॉर्मल होने के चांसेस है 3.1 आउट ऑफ 10 और एबनॉर्मल होने के चांसेस 7 टाइम्स है, एंड सेम इज विद दिस वन. सो आंखों से देखने में तो ये सारे, या माइक्रोस्कोप से देखने में तो ये सारे ही हेल्दी एम्ब्रियोज हैं, पर जब आप उसको वेब पर एनालाइज करते हो विद अ स्पेशल सॉफ्टवेयर, देन यू एक्चुअली कम टू नो व्हाट इज द वायबिलिटी पोटेंशियल. There are few procedures which can increase the success rates in IVF. So PGS, जैसे मैंने आपको बताया, we were the Touch Clinic was the first one to introduce the PGS screening on site in North India. ये एक अच्छा सा एम्ब्रियो है, इसका लेजर से एक बायोप्सी कर ली जाती है और फिर इसको जांच के लिए भेजा जाता है कि इसमें कहीं कोई जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है. इसके दो फायदे हैं. एक तो कई ऐसी डिजीजेस होती हैं जो फैमिली में कैरी ओवर होती हैं, जैसे थैलेसीमिया है, या एज ज्यादा है तो डाउन सिंड्रोम, या प्रीवियस बेबी बीइंग एब्नॉर्मल, या ए बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. अगर दोनों पार्टनर्स को ये प्रॉब्लम है तो फिर ये सेल की बायोप्सी करके इसमें इस सेल में जांच कर ली जाती है कि भाई ये वाले जो सेल हैं ये जेनेटिकली नॉर्मल है कि एब्नॉर्मल, और जो नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं वो ही आपके अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं. So PGS determines the chromosomal status of an embryo by screening all 23 chromosome pairs prior to transfer. So हमने कई बार सुना होगा कि थर्ड मंथ में या फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पता चलता है कि बेबी एबनॉर्मल है और फिर उसका अबॉर्शन करना पड़ता है. So अगर आप PGS पहले करा लेते हो तो उस ट्रॉमा से आपको निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एबनॉर्मल एम्ब्रियो वो ट्रांसफर ही नहीं किए जाएंगे. PGS is now referred to as PGTA, that is pre-implantation genetic testing for aneuploidy. Aneuploidy means abnormal chromosomes. The screening helps to reduce the chance of having a child with extra or missing chromosome. The examples are Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome. Now, who is PGS for? Ideally, PGS is for everyone. But then, हर एक में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि it is an expensive procedure. Second, हर जगह इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है. तो कुछ केसेस में ये जरूर recommended है, वो है definitely for older age, more than 35, recurrent IVF failures and recurrent miscarriages. So benefit of PGS is it increases the chances of pregnancy, reduces risk of miscarriage. We can transfer one embryo rather than जब PGS नहीं किया होता तो हम probability of success बढ़ाने के लिए 2 and in some cases 3 embryo transfer करते हैं. But then अगर आपका PGS किया हुआ embryo तो उसमें 1 embryo is good enough to give the pregnancy. And less number of IVF cycles are needed. Thus, it reduces the cost and time. We all know the risk of abnormal child increases with age of parents. Age of 30 पे risk of having an abnormal child is 23%. वहीं पर अगर आपके age 45 है, risk is 84%. So अगर आपके age more than 35 है, तो definitely PGS should be done. And Touch Clinic में PGS के rates are very, very economical. Success rate reaches above 50% with PGS, और इसका सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है क्योंकि आप एबनॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो. तो ऑब्वियसली जब जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो सक्सेस रेट ज्यादा होगा. सो हाउ PGS इज डन? इट्स सेम जैसे IVF करते हैं, आपको इंजेक्शंस लगा के आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, उसमें एग्स बनाते हैं. जब एग प्रॉपर बन जाते हैं तो उसमें एनेस्थीसिया देके उन एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है. आपके पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके फिर उनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं और 5th डे पर लास्ट बायोप्सी करते हैं. आजकल डे 3 बायोप्सी PGS में नहीं की जाती है, डे 5 बायोप्सी की जाती है और हम लास्ट की बायोप्सी करके उसको जांच के लिए भेज देते हैं. तब तक आपके एम्ब्रियो को फ्रीज करके केयरफुली स्टोर कर लेते हैं. बायोप्सी करने से एम्ब्रियो खराब नहीं होता है और फिर वो बायोप्सी में सिर्फ एक सेल लिया जाता है और उसकी रिपोर्ट आ जाती है. जो एम्ब्रियो नॉर्मल होंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो एबनॉर्मल है उनको आपकी कंसेंट लेके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. So this is how the PGS is done. You can see in this video. I think yeah, we can see it now. So you can see a beautiful ये बहुत सुंदर ब्लास्ट है.
ये लेजर लाइट आ गई है, लेजर से इसमें एक होल बनाया जाता है और उससे फिर पिपेट से सेल ले लिया जाता है। So why is it not done everywhere? It's a very high tech procedure. इसके लिए बहुत अच्छी लैब और बहुत अच्छा सारा कुछ चाहिए होता है. It is expensive. IVF lab should be very high standard, and Touch Clinic is the first clinic north of Delhi to start PGS at site. This is the international validation certificate of the PGS for the Touch Clinic. So अब इसके आगे का I invite Dr. Smithu Sede, who is the consultant IVF specialist and embryologist at the Touch Clinic, Mohali. She has more than 17 years of work experience. Earlier, she was in PGI. Now, her field of interest is embryology and assisted reproductive technologies, and she is a member of IFS and MOOCs. So, I invite Dr. Smithu to discuss the other factors which will help you in improving the IVF success rate. Thank you. All the best. Thank you, Dr. Preeti, for the kind introduction. So now I will be talking about the next procedure or the technique which helps in improving the IVF success rates, and that is ERA, which is called Endometrial Receptivity Array. Many women undergoing IVF are unable to get pregnant even after transferring good quality embryos. Even grade A embryos के transfer करने के बावजूद भी IVF का failure हो जाता है. तो ये ऐसा क्यों होता है? It's because the uterus is not ready to receive those embryos. So the timing of the embryo transfer is also very important. It should neither be too early nor too late, but at just the right time. There is a soil and seed theory. वो कहते हैं कि एक अच्छा healthy पौधा बनने के लिए we need a good quality seed and fertile soil. इसी तरीके से एक अच्छा healthy baby होने के लिए we need good grade A embryo and very good quality endometrium. Now, what is endometrium? जो ये जो आपका मार्कर आपको दिखा रहा है, this is the interior of the uterine lining, and this is prepared each month for the arrival of an embryo. So यहाँ पर baby embryo lodge करता है और baby grow करता है. तो it is the nest where the embryo implants and resides during gestation. So even the best embryo will fail to implant if conditions aren't right in the endometrium. तो एंडोमेट्रियम की क्वालिटी सही होना बहुत जरूरी है फॉर IVF सक्सेस. What is endometrial receptivity? The endometrium is receptive when it is ready for embryo implantation to occur. This period of receptivity is called window of implantation. So endometrial lining के अंदर there is a period of receptivity, और इस receptive period में अगर embryo transfer किया जाए, then the success rates improves by around 50 to 20% over the IVF success rates. And each woman has a unique window. हर lady की अपनी ही unique window of implantation होती है. And knowing your own personal window of implantation, it can optimize the chances of getting pregnant by doing personalized embryo transfer. So अब हमें इस विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन का कैसे पता चला जाए कि which is the time, which is the day जब हमारी जब ये endometrial lining most receptive है to take the embryo. ये पता चलता है ERA test से. ERA test is a genetic diagnostic test that determines each woman's unique personalized embryo transfer timing. So इस ERA test से हमें उस रिसेप्टिव पीरियड का पता चलता है कि which is that particular day, which is the exact time जब हमें अपने good quality grade A embryos को ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे कि IVF के सक्सेस रेट्स और इम्प्रूव हो सके. Indications of using ERA, आइडियली हर पेशेंट जो IVF के लिए जा रहा है उसको ERA करवाना चाहिए, but especially in those patients जिनमें repeated IVF failures हो रहे हैं,
जिन्होंने कई साइकिल IVF करवाए हैं, कभी किसी क्लिनिक से कभी किसी क्लिनिक से, एंड फिर भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आ रही है। तो दीज आर पेशेंट्स जिनके रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो रहे हैं, तो उनमें ये एरा टेस्ट बहुत हेल्पफुल होता है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? एरा कराने के फायदे क्या है? फायदा यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि it maximizes your chance of getting pregnant with IVF and you don't lose your good embryos. आपने IVF का साइकिल करवाया, स्टिमुलेशन करवाई, अल्ट्रासाउंड कराया, ओवा पिकअप करवाया, फिर इक्सी से एग्स एंड स्पर्म की फ्यूजन हुई, एंड देन यू आर क्रिएटिंग वेरी गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज। बट अगर आपकी एंडोमेट्रियम उन एम्ब्रियोज को, उन गुड क्वालिटी प्रीशियस एम्ब्रियोज को रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव ही नहीं है, तो ये सारी मेहनत बेकार की है। सो वी नीड टू हैव गुड क्वालिटी एंडोमेट्रियम। ये दोनों के ऊपर इक्वली हमने ध्यान देना है और इक्वली वर्क करना है। एक तो टू क्रिएट गुड क्वालिटी ग्रेड ए एम्ब्रियोज, एंड सेकेंड थिंग इज टू क्रिएट गुड रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम। एरा दो तरीके से किए जा सकते हैं, आइदर नेचुरल साइकिल में या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी साइकिल में। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी साइकिल ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, और इसमें पीरियड्स के डे 1 डे 2 से ईस्ट्रोजन टैबलेट शुरू करी जाती है, एंड डोज इज 6 मिलीग्राम पर डे, एंड आफ्टर 10 to 11 days of ईस्ट्रोजन प्राइमिंग, प्रोजेस्टेरॉन ऐड किया जाता है, एंड दैट इज 800 milligrams per day. And after 5 days of progesterone or 120 hours of progesterone, endometrial biopsy करी जाती है using a very thin cannula called pipple. उस पिपल से endometrial linings की कुछ थोड़ा से endometrial curettings के बिट्स को निकालकर उसको एरा की टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सो जेनेटिक लैब में ये सैंपल पहुंचता है, तो वहां फिर RNA एक्सट्रैक्शन होती है, एंड जनरेशन सीक्वेंस एनालिसिस के द्वारा मोर देन 200 मॉलिक्यूलर जीन्स की स्टडी करी जाती है, एंड देन रिपोर्ट कम्स इन अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 days, एंड इस रिपोर्ट के बेसिस पे नेक्स्ट साइकिल फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल किया जाता है। एरा के टेस्ट रिजल्ट्स आइदर रिसेप्टिव आ सकता है या नॉन रिसेप्टिव आ सकता है। अगर रिसेप्टिव रिजल्ट है, इसका मतलब है कि द विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन इज लोकेटेड ऑन द डे ऑफ टेकिंग द सैंपल। जिस दिन आपने एरा का सैंपल लिया था, फॉर एग्जांपल अगर वो डे 17 था, डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस समय विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन आपका सही था, आपका रिसेप्टिव पीरियड चल रहा था। सो अपने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल भी एग्जैक्टली मिमिक करना है एरा साइकिल को, एंड आपका फ्रोजन एम्ब्रियो का ट्रांसफर भी डे 17 पे ही होगा। So the recommendation is to proceed with embryo transfer under the same conditions as per biopsy. So frozen embryo transfer cycle may be same dose of estrogen, same dose of progesterone, same number of days, the duration of estrogen, progesterone, वो सारा कुछ same रहेगा as in the era cycle, and frozen embryo transfer cycle exactly era cycle को mimic करेगा, and then ये receptive result will show success. And अगर आपका non receptive result है, it means you have a displaced window of implantation, and in this case with ERA computational predictor, window of implantation is indicated when the personalized embryo transfer is optimal. अगर आपके नॉन रिसेप्टिव रिजल्ट आता है, इसका मतलब आपका जब सैंपल लिया गया था तब नॉन रिसेप्टिव पीरियड चल रहा था, एंड फिर थ्रू कंप्यूटर प्रेडिक्टर वो फिर खुद रिजल्ट बताएंगे कि विच इज द एग्जैक्ट डेट जब आपका रिसेप्टिव पीरियड शुरू होगा, एंड देन आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली करना है। So this is all about the ERA technique. Now I will be talking a bit about the infertility facilities available at the Touch Clinic. So जब कोई infertile couple clinic में आता है, so we do a thorough history taking, एक thorough workup होता है,
and which includes endometrial biopsy, ovarian stimulation, follicle monitoring, hormonal profile, and semen analysis. Intrauterine insemination can be done either using the husband or the donor sample. The basic IVF procedure is available, and we also do XA, MC, PGS, ERA, blastocyst culture, laser-assisted embryo hatching, freezing of eggs, sperm, and embryos, frozen embryo transfer, surgical sperm retrieval, egg donation, fertility enhancing laparoscopic surgeries, and ophiocystroscopy. So all these advanced techniques are available at the Touch Clinic. It's the first center north of Delhi to start the PGS facility at site, and we do individualized treatment, and no batching is done for the IVF patients. The packages are patient friendly, and we provide a highest standard of care at every stage of infertility treatment. The services are transparent and ethical, and the Touch Clinic is registered by State Registration Authority under Punjab government. Now I invite Mrs. Achal for the concluding remarks. Thank you so much, ma'am. Now, ending up the session by telling you some information about the Touch Clinic services. We take all precautions for COVID-19. Consultation with prior employments only. COVID testing is done prior to delivery or any surgery. We take care of all the safety parameters in our clinic. We have a Touch Pharmacy also. Home delivery of medicines available at your doorstep by calling on the number 0172 5032 467 9613112000. आप इन नंबर्स पे कॉल करके मेडिसिन अपने घर पे बुलवा सकते हैं. We have a touch lab also. Home blood sample collection facilities is also available. You can call on the number which is coming on the screen 9915748821 और 9915496821. इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे एग्जीक्यूटिव को अपने घर पे ब्लड सैंपल के लिए जो है बुक कर सकते हैं. ड्यूरिंग कोविड-19, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 से अभी कई लोग जो है वो वीडियो कंसल्टेशन और फोन कंसल्टेशन जो है वो कराना चाहते हैं, विजिट कम करना चाहते हैं. उसके लिए हम वी हैव द सर्विसेज आल्सो फॉर द कोविड फॉर द वीडियो कंसल्टेशन एंड द फोन कंसल्टेशन. फॉर दैट you have to book your booking for the video consultation by this numbers 9915748821 और 9888448803. आप इन नंबर्स पे कॉल करके वीडियो कंसल्टेशन या फोन कंसल्टेशन के लिए बुकिंग जो है वो बुक करवा सकते हैं. जो हमारे क्लिनिक की टाइमिंग्स है वो है 10 o'clock in the morning till 6 PM. सो जैसे कि आप सबको पता है हम एवरी फ्राइडे जो है वो वेबिनार करते हैं सेम टाइमिंग 3 to 4 में, और ये हमारा लास्ट वेबिनार था. जो जितने भी हमने टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं. अगर आपको लगता है ऐसा कोई टॉपिक जो हमने अभी नहीं कवर किया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नंबर्स पे जो स्क्रीन पे आ रहे हैं मैं रिपीट कर देती हूँ 9915748821 9888448803. आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप ऐसे टॉपिक बता सकते हैं जो आज तक हमने कवर नहीं किया है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं. तो नेक्स्ट फ्राइडे हम उस टॉपिक के ऊपर वेबिनार करेंगे. ठीक है जी. थैंक यू. से ट्यून, स्टे सेफ.